नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच अब जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार को सुबह सुबह इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था, उसका जवाब ईरान की तरफ से भी दे दिया गया है। खबर यह मिल रही है कि ईरान की तरफ से भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। तेल अवीव के आसपास के इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसमें एक महिला की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों की तरफ से कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। शुक्रवार सुबह सुबह जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, अब ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया है। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सोचिए, पहले जब इजराइल ने हमला किया तो टॉप कमांडर्स ईरान के मारे गए थे, और अब जब ईरान ने हमला किया है तो इजरायली महिला की मौत की खबर मिल रही है। जबकि ईरान के अटैक से तेल अवीव के पास एक महिला की मौत हुई है, इस तरह की खबर भी मिल रही है। पहले इजराइल की तरफ से तेहरान को दहलाया गया धमाकों से, एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, आसमान में धुआं धुआं हुआ, लेकिन अब ईरान की तरफ से भी जोरदार जवाबी हमला किया गया है। और इस बात को आप मानकर चलिए कि दोनों देशों के बीच ऑफिशियल तौर पर जंग छिड़ चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इजरायली पुलिस की प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि शुक्रवार रात को ईरान के मिसाइल अटैक में तेल अवीव के पास रमात गन इलाके में एक महिला की मौके पर मौत हुई है। इसके अलावा आपको बताते चले, इजराइल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात इजराइल की तरफ से भी ईरान पर अटैक किया गया है, जिसके बाद ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हुआ। इजरायली हमलों को रोकने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि मध्य ईरान के इस्फहान शहर में इजरायली हवाई हमलों को रोकने के लिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ। इसका बाकायदा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ईरानी डिफेंस सिस्टम इजरायली अटैक से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, बदले में ईरान भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। इन सब के बीच खबर यह मिल रही है कि कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में शुरुआती दौर में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी बताई जा रही है। बाद में इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई और फिलहाल लगभग $75 प्रति बैरल पर यह कारोबार कर रहा है, जो कि 5% ज्यादा है। अच्छा, इजरायली सेना दावा कर रही है कि हमने ईरान के 2 एयरबेस पर हमला किया है, उन्हें तबाह किया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इसी तरीके से पुष्टि की जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई ईरान की इस्लामिक सत्ता से है, जो अपने ही लोगों को दबा रही है। और इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस शासन के खिलाफ आवाज उठाएं और आजादी की तरफ कदम बढ़ाएं। हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। यानी इस्लामी जो सोच है या इस्लामिक सत्ता वाली जो सोच है, उसके खिलाफ इजराइल ने ये बड़ा वॉर छेड़ दिया है। ये कहना है वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, जबकि वो कह रहे हैं कि हम बाकी आम लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। इन सब के बीच जो बयान वायरल हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें वो ट्रंप का नाम लेकर बाकायदा उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं, जरा अब वो बयान भी सुन लीजिए। और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी दोनों देशों के बीच वॉर को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सुनिए नेतन्याहू को। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister,
I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you,
Believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.